is that how to leverage it to providing financial securities to the majority of the Indian population. As our survey tells, 69% households are financially insecure. So I'll request Radhika to speak a few words, and then we'll begin the question and answer session. Thank you so much, and congratulations to all of you for this fantastic summit. I must say I saw a lot of teasers for that. I especially loved the Data Coin app. I think it is going to provide data that is very unique. And so I don't download a lot of apps on my phone, but after I exit this summit, I plan to download the app. So congratulations, and I would really encourage everyone to do that. I think the Honorable Minister spoke a lot about India's digital public infrastructure and the number of initiatives the government has made in terms of bringing banking to the unbanked. I want to, and that is the savings and transaction part. I want to focus my comments on one aspect, which is the next aspect, which is investments. And it's perhaps something that I come closest to. And I want to, if you let me, tell a 30-second story. So I just delivered a child, and because I had a complicated pregnancy, I had a nurse who used to come and give me these injections in my first trimester. This was last year. And वो घर आती थी, etc. तो उसको पता चल गया कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मेरा कुछ ताल्लुक है. So 5-6 times after that, she said, "You are from the mutual fund industry?" I said, "You found out?" She said, "मुझे SIP करना चाहिए." मैंने कहा, "क्यों पूछ रहे हैं?" She said, "मैं नर्स बनी हूँ, मेरी बेटी ये नहीं बनेगी, मैं अपनी बेटी के उसके लिए SIP करना चाहती हूँ." ऐसी एक और कहानी है, जब हमारा भारत बॉन्ड लॉन्च हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव था, तो उस टाइम पे बहुत होर्डिंग्स लगी. एंड colony came to me and said, "Madam, आज तक आपके किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये 1000 रुपए में हमें भी कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, आप हमें हेल्प करेंगे?" And I think that is the power of making investments accessible and of financial inclusion. I think when you make investment products accessible, an SIP or a mutual fund or an investment instrument is not a product. It is a way to enable financial freedom. And I think we have to remember that India of this generation has three very important things going for it. One is higher level of aspirations. Today's generation is far more aspirational about their careers and their money than my generation was and than my father's generation was. The second is they have far more awareness, thanks to people like you and many other platforms that are spreading awareness. Today, a 15-year-old knows what, he may know correctly or incorrectly, what a mutual fund is, what cryptocurrency is, what wealth is. Awareness is incredible. And thirdly, because of all this digital public infrastructure, fintechs, money and money solutions are far more accessible. So this combination of aspirations, awareness, and availability and accessibility is going to be a big movement. And I'm sure my son's generation will see a day where you will have Har Ghar SIP. Thank you, Radhika, for telling these stories. And in the Money9, we normally getting interacted with a lot of people who are asking questions. We have got a show called Helpline Show, which is a lot of people come and ask these questions. But simultaneously, they also ask about the certain things which are there in mind and what the mutual fund industry has to provide. Sure. So I think as a thought leader and as a visionary of that, the biggest challenge which people are actually facing towards the mutual fund industries about how to get maximum out of the returns. And when they come to the entire financial saving architecture, they still don't prefer mutual funds than the other physical finance savings. And then we come to the next level where we are facing challenges of India's receding financial savings as a percentage of the GDP. As India has been told that we are a nation of savers, we are thrift-friendly nation,
But the data comes after COVID shows that people are not saving enough. They are having challenges in the saving. So the question is that how quickly mutual fund industry can become a kind of option for the people who don't want to go into the bank savings and get there because of the market volatilities. Many times people don't feel safe in putting money into the mutual funds, and they again prefer go back to the physical investments like gold and property. I think you are asking a great question. I don't think, and I'll address mutual funds separately, I don't think savings rate is the problem. India still, savings rate has dropped, but I think savings rate is still one of the better ones in the country. The translation to savings to investment is still a problem. If you look at mutual fund penetration to GDP today in India, it is 16%. Brazil is 65%, China is 20%, UK, which we just crossed as an economy, is above 80%. That the world average is 40%, and the world doesn't include some great countries. So I think the translation from savings to investment does not happen. Now, as far as mutual funds, I think we are a very underrated industry, and I know I come with a bias, but today an Indian consumer has access to a low-cost, transparent, and regulated product, and yet only 4 crore Indians are doing this. I think the problems are 3 very quickly. One is people think of mutual funds as only equity, and then they compare it to safe assets. Mutual funds can provide you an ability to invest in the safest products like a Bharat bond and in some of the riskiest products. So that myth needs to be changed. The second, as you said, is people think of mutual funds in terms of return. आपको जो सवाल आते होंगे, they must be best performing mutual fund, बताओ. कोई म्यूचुअल फंड को गोल के जरिए नहीं देखता. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इंश्योरेंस हैज बीन सो सक्सेसफुल इज वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग गोल्स. म्यूचुअल फंड मेरा रिटायरमेंट का गोल फुलफिल कर सकता है, कोई मेरी बेटी की शादी का गोल कर. आदमी ना सुबह उठ के रिटर्न्स नहीं खाता, गोल्स के लिए जीता है. आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम. एंड द थर्ड लार्जर प्रॉब्लम इज the country still needs to invest in a much larger distribution ecosystem to take these products to the masses. I mean, I would center the problem on these 3 issues. I'll ask this question in Hindi because Radhika ji, a lot of people are watching it. I think in entire 7 languages, TV9 network and Money9 channels are watching it. The biggest क्वेश्चन द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द भारत के लोग सोचते हैं कि उनकी बचतें महंगाई को कैसे हराएं. उनकी रोज की लड़ाई सुबह शाम इस बात से है कि उनकी जिंदगी जीने की लागत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उनकी बचतों पर रिटर्न उस रफ्तार से नहीं बढ़ता. पहली बार लंबे समय के बाद हमने देखा, बट देयर इज अ साइड इफेक्ट्स ऑफ इट, दैट इंडियाज फिक्स्ड डिपॉजिट रेट हैज गॉन अप अबव द इन्फ्लेशन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन दे कम बैक और वो जब वापस देखते हैं बाकी जगह, तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में उनको इन्वेस्टमेंट की वो वॉलेटिलिटी दिखाई देती है. फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड और जनरली एज एन एक्सपर्ट, भारत में क्या ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए कम से कम 2 या 4 जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड हों, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जिससे कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो फाइनेंशियली लिटरेसी के सेकंड लेवल पर आए और म्यूचुअल फंड में सरप्लस इन्वेस्ट करके रिस्क ले सके, उसे इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल सके? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 6-7% देश में इन्फ्लेशन है या महंगाई है, तो अगर आप एफडी में पैसा लगाएंगे तो पोस्ट टैक्स तो एक्चुअली आप नेगेटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं, और ये रिटायरीज की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अगर आप बात करें ना. ये कहना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक्चुअली मल्टीपल जरिए बनाए हैं जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, और वॉलेटिलिटी उतनी नहीं है. क्योंकि आपकी दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी फाइनली फिक्स डिपॉजिट करने वाला आदमी या औरत है, तो उसको वॉलेटिलिटी से डर लगता है. पोर्टफोलियो 30% गिरता है तो आपको भी क्वेरीज ज्यादा आती हैं, हमें भी आती हैं. 2-3 चीजें हैं. एक तो हमारी इंडस्ट्री में अगर आप इक्विटी करें, लेकिन आप इक्विटी एसआईपी के जरिए करें, तो क्या होता है, आपकी वॉलेटिलिटी कम हो ही जाती है. पूरे से हमने स्टडी किया है कि अगर आप 10 साल की एसआईपी करें और बाजार ने एवरेज 5% से भी कम रिटर्न दिए, तभी भी आपके एसआईपी रिटर्न 9-10% होते ही हैं, क्योंकि एसआईपी वो एवरेज कर देता है. तभी भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं. दूसरा, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाए हैं. सबसे बड़ी और पॉपुलर कैटेगरी 2022 की एक बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी थी, जिसमें इक्विटी और डेट का मिश्रण था. इसमें वॉलेटिलिटी कम है,
लेकिन लंबे समय में आपका 11% रिटर्न बन जाता है। 11 मेरे खुद 70% इन्वेस्टमेंट ऐसी कैटेगरी में है। तीसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स का जरिया बताया है जिनमें एफडी से कई ज्यादा अच्छी टैक्सेशन है। तो प्रोडक्ट्स बहुत है, लेकिन उन्हें समझाने की जरूरत है कि वो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, बिकॉज मैडम राधिका हैज टू गो फॉर अनदर मीटिंग। एक और डिलेमा लोगों के दिमाग में इस बजट से शुरू हुआ कि वेदर पॉलिसीज टैक्स, स्पेशली द मिडिल क्लास, वेदर टैक्स पॉलिसीज आर इन्वेस्टमेंट सेविंग फ्रेंडली और नॉट। हमने देखा इंडिया में एक पूरी जर्नी थी जब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन इंसेंटिव्स दिए जाते थे, और देयर लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल दैट हाउ दे हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडिया सेविंग बिहेवियर एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ गेटिंग टैक्स इंसेंटिव्स. नाउ द टैक्सेशन अप्रोच इज चेंजिंग. Government is going towards the lower tax rates but without incentivizing savings. How do you see this entire scenario evolving down the line for 4-5 years? Because here and how mutual fund industry is actually preparing for it, because अभी म्यूचुअल फंड तो टैक्स इंसेंटिव के दायरे में आता ही नहीं, बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें आता है. इसका असर कैसे पड़ेगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? No, I think with this budget and over last 3-4 years, tax policy has evolved के अभी आप टैक्सेशन के लिए निवेश नहीं करेंगे, टैक्सेशन बेनिफिट के लिए आप कोई प्रोडक्ट में निवेश नहीं करेंगे, जो आमतौर से हिस्टोरिकली हमारी चॉइस होती थी, क्योंकि टैक्स हर इंसान बचाना चाहता है. अब आप निवेश उस चीज में करेंगे जो अच्छा प्रोडक्ट है और जो आपके लिए अच्छा है. हाल ही में हुए हुए बजट में यू वुड हैव सीन वेदर इट इज मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, मेनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन द गाइज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनके जो टैक्सेशन आर्बिट्राजेस थे ये बंद हो गए हैं. सो नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन मेरिट, जो कि मेरे हिसाब से बुरी चीज नहीं है. आई थिंक एज एन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई हैव नो आस्क एज एन इंडस्ट्री फॉर टैक्सेशन, बिकॉज नाउ देर इज पैरिटी. आप इक्विटी में निवेश करते हैं, यू हैव 10% टैक्सेशन विच इज अ वेरी गुड रेट ऑफ टैक्सेशन. आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यू आर फार बेटर ऑफ देन एन एफडी. तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ है. एक मेरी अगर विश होगी कि जैसे यूएस में 401 के प्रोग्राम हो गया है जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए, अगर हमारी इंडस्ट्री को वो मिल जाए तो वो एक बहुत अच्छी चीज होगी. Thank you, Radhika ma'am, for sparing the time from your busy schedule and gracing this occasion. Over to Gaurav. शुक्रिया सर. शुक्रिया राधिका जी. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मुद्दे पर आपकी राय हम सभी के लिए बहुत बहुमूल्य है. और अब मैं TV9 के एडिटर बिजनेस एंड इकोनॉमी, TV9 नेटवर्क के एडिटर एंड बिजनेस एंड इकोनॉमी मिस्टर राकेश खार से आग्रह करूंगा कि प्लीज वो मंच पर आएं और राधिका जी को सम्मानित करें. एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो मैम का. और इस बीच आपको यह भी बता दूं कि Money9 का ये फाइनेंशियल फ्रीडम समिट Money9 के मोबाइल ऐप्स पर, TV9 नेटवर्क और Money9 के नेटवर्क के YouTube, Facebook चैनलों पर भी पूरे देश में पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं. और आप भी Money9 ऐप प्लीज डाउनलोड करें और अपना फीडबैक भी हमें जरूर पहुंचाएं, क्योंकि Money9 के जरिए हमारा जो आज का मोटो है वो यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले. जैसा कि अभी राधिका जी ने बताया कि कैसे हर घर एसआईपी बहुत जल्द हमारी जनरेशन में हम देखेंगे. सवाल वही है कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और उसी मंथन पर जुटा हुआ है यहाँ पर TV9 नेटवर्क, और हम लगातार उसी पर बात करते हुए, क्योंकि मुंबई आने का मकसद यही है. देश की आर्थिक राजधानी है. देश की आर्थिक राजधानी से जुड़े हुए तमाम बड़े लोग, बड़ी हस्तियां, बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे इंटरेक्शन करके, उनसे मंथन करके, उनसे चर्चा करके हम वही वो अमृत कलश निकालना चाहते हैं जो इस वक्त सबसे जरूरी है देश की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. हर घर तक, हर शख्स तक जो सोच है कैसे उनको वित्तीय समावेश में शामिल किया जाए, वित्तीय समावेश किया जाए उनका, वो इस वक्त की जो सोच है. Created a special memento for ma'am, clicking her photo and putting it for a graphic, and that process is taking a bit long. I think madam has to leave. I'll send this memento to your office and deliver it. There's a special memento that is they're getting, and there's a bit time on the printing. Thank you ma'am. Thanks a lot for coming. A huge round of applause for ma'am. Please जोरदार तालियों के साथ मैम का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सब.
चलिए अब इस कार्यक्रम के पहले एक्सपर्ट पैनल सेशन की शुरुआत करते हैं। सरकार ने 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा कवर के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है और इस विशेष सत्र में अब हमारे साथ होंगे भारत के बीमा उद्योग से जुड़ी जानी मानी हस्तियां और विशेषज्ञ। इस पैनल की मॉडरेटर होंगी मनी 9 की पर्सनल फाइनेंस एडिटर प्रियंका संभव, और मैं प्रियंका से आग्रह करता हूं कि वो स्टेज पर आए और उनके साथ पैनल में जो चर्चा के लिए